फिर ऑफलाइन। हेलो, आवाज आ रही है? नमस्ते जी। चाय वाय पी लीजिए, खा लीजिए, कुछ कर लीजिए।
हेलो, आवाज आ रही है? और स्क्रीन विजिबल है? स्टार्ट कर रहे हैं। एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। बोर्ड्स के लिए ये चैप्टर है ज्यादा, राइट। इसी चैप्टर में अपने एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, माइक्रोब्स वाला। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसको डिटेल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एनसीईआरटी में अपने इतना ही है। बाकी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है। चैप्टर बड़ा है बट इसका जो वेटेज है वो ज्यादा नहीं है। मेरे को लगता है 3 से 5 मार्क्स का ही है। बट फिर भी हमें मेन मेन चीजें इसमें देख लेनी है। इसमें बेसिकली चैप्टर का नाम है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे फूड का जो प्रोडक्शन है वो उसको एनहेंस करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं फूड के प्रोडक्शन को। इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन कह रहे हैं फूड इज वन ऑफ द बेसिक नीड्स दैट इज एज इट गिव्स अस एनर्जी फॉर एवरीथिंग। इट कीप्स अस अलाइव, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। So food can be defined as anything solid or liquid which when swallowed, digested and assimilated by the body keeping us well. It is organic, energy rich, non poisonous, edible, खाने लायक and nourishing substance होता है। We'll talk about how we can improve food production by plant breeding, right? Plant breeding से कैसे? तो इसमें कुछ चीजें, right? The improvement or purposeful manipulation in the heredity of crops and the production of new superior varieties of existing crop plants constitute what is called plant breeding. It is therefore an applied branch of botany. It is in fact an art and the science of changing and improving the heredity of plants. Right? इसमें ये सारी चीजें कुछ भी आपको नहीं पढ़नी है, इतना कचरा नहीं पढ़ना है। पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप ब्रीडिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। This green revolution was the father of this green revolution at the world level is Norman E. Borlaug. He was an American biologist who has been called the father of green revolution, right? And Dr. M. E. Swaminathan, he has been called the father of green revolution in India for his role in introducing and further developing high yielding varieties of wheat in India. हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स टेक्निक। यहाँ से आपको 2 मार्क वाले क्वेश्चन और 3 मार्क वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। So it is a chief method. Hybridization is a chief method that offers greater possibilities in crop improvement than other method. Right? It uses this method. The use of this method is only effective means of combining together desirable characters of two or more varieties. By this method, one can create new genetic combinations of already existing characters and new genetic variations. Hybridization can be intravarietal or intervarietal. Intervarietal मतलब between two varieties of the same species, interspecific between two species of the same genus, intergeneric between two genera of the same family। मतलब हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं? इंट्रा वैरायटल भी कर सकते हैं, वैरायटीज के बीच में एक ही वैरायटी के अंदर कर सकते हैं। मतलब इंट्रा मतलब विद इन, तो विद इन द वैरायटी किया तो प्लांट के वैरायटी के अंदर, तो हाइब्रिडाइजेशन वुड बी इंट्रा वैरायटल। इंटर वैरायटल बिटवीन वैरायटीज ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के अलग अलग वैरायटीज के बीच में करा सकते हैं। इंटरस्पेसिफिक बिटवीन टू स्पीशीज ऑफ द सेम जीनस करा सकते हैं। इंटरजेनेरिक बिटवीन टू जेनरा ऑफ द सेम फैमिली करा सकते हैं। As parental plants are distantly related, such crosses are also called wide or distant crosses. इसमें क्या करना है? कलेक्शन। What are the steps? The main steps of hybridization of the plant breeding programs are as follows. स्टेप्स याद रखना है। पहला क्या करेंगे आप? वेरिएबिलिटी, जो भी वैरायटीज को आप क्रॉस करने वाले हैं, सुपीरियर वैरायटीज को, उनको कलेक्ट करेंगे। Wild species and relatives of the cultivated species having desired traits should be collected and preserved.
The entire collection having all the diverse alleles, that is variations for all genes in given crop, is called germplasm collection. Germplasm collect करेंगे. Germplasm conservation can be done in following ways: in situ conservation or ex situ conservation. हेलो. राहुल सर, राहुल सॉरी, दीपक सर, दीपक क्या बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी का लेक्चर हो जाएगा तो। हेलो. In situ conservation, it can be done with the help of forests and natural resources. Ex situ conservation, it is done through botanical gardens, seed banks, etc. Second is the whatever we have isolated, whatever we have collected varieties, we should evaluate and select the parents. It is an important and essential step. The collected germplasm is evaluated, screened to identify plants with desirable characters. The selected parents must be healthy, vigorous, and should show desirable but complementary features. ये पॉइंट लिख देना आप, आएगा क्वेश्चन तो. नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन. द वैरायटी showing maximum desirable features is selected as female recurrent parent and the other one as male which is donor parent, which lacks good character found in recurrent parent. मतलब जो भी varieties आपने लिए हैं showing maximum desirable features is selected as female recurrent parent and the other one as male parent donor. The pollen grains from anthers of male parent are collected and then artificially dusted over the stigmas of the emasculated flowers of female parent. Pollination is followed by seed and fruit formation in due course. The hybrid F1 progeny is selected and evaluated for desired combinations of characters. Now these are the steps. ये पीला बॉक्स भी अगर किसी को याद रहता है तो it would be easy. पहला आप क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी फ्रॉम जर्म प्लाज्म और जीन बैंक. फिर इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स कर लेंगे. फिर सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स विद डिफरेंट क्वालिटीज कर लेंगे. सिलेक्टेड पेरेंट्स सेल्फ फॉर 3 to 4 generations टू मेक देम होमोजाइगस और ट्रू ब्रीडिंग कर लेंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एज मेल डोनर, male parent donor or female parent recurrent, which can be used for 2 or more generations. Collection of pollen grains from flowers of male parent से pollen grain collect करेंगे. Removal of stamens from the flowers of female parent, emasculation. Artificial cross pollination by using pollen grains collected from male parent. Artificial cross करा देंगे. फिर बैगिंग करेंगे, टैगिंग करेंगे of the emasculated flower of female parent. Development of fruit and seed representing F1 hybrid generation. Selection and testing of F1 hybrid for combination of desirable characters. Field trials for yield कर लेंगे and testing and the release of the variety कर लेंगे. फोर्थ, तो पहला स्टेप क्या था? आपने कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म, सॉरी, आपने कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी किया. दो टाइप के हो सकते हैं, इन सिटू एक्स सिटू. जो उसके बाद है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे. मेल पेरेंट डोनर होगा, फीमेल पेरेंट रिकरेंट होगी. सुपीरियर क्वालिटीज के साथ आप करेंगे. फिर हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे. हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बाइनेंट्स. जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों में सुपीरियर रिकम्बाइनेंट्स को आप सेलेक्ट करेंगे. The F1 hybrid plant showing superiority. The F1 hybrid plant showing superiority over both parents and having high hybrid vigor are selected. Such hybrids are then selected for few generations to make them homozygous for sad desirable characters till their state of uniformity, so that the characters will not segregate further. फिर टेस्टिंग करेंगे, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स. ये स्टेप डायरेक्ट लिख लेना. फिर वी नीड टू लर्न समथिंग. इंडियन हाइब्रिड क्रॉस के एग्जांपल्स देखने हैं. वी शुड लुक फॉर द एग्जांपल्स ऑफ इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स. पहला वीट एंड राइस देखेंगे. 1960 में wheat and rice population production was increased tremendously. Norman E. Borlaug developed semi-dwarf varieties of wheat. Now we need to look सोनालिका एंड कल्याण सोना. सोनालिका, ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बोर्ड्स के लिए वन लाइन है. पीवाईक्यू. Sonalika and Kalyan Sona are the two hybrid wheat varieties grown in India. मुझे Semi-dwarf.
हेलो। दादा। Sonalika and Kalyan Sona are the two hybrid wheat varieties grown in India. Semi-dwarf rice varieties were taken from IR8 International Rice Research Institute and Taichung Native One from Taiwan. International Research Rice Institute IR8 and Taichung Native One from Taiwan and introduced in India. Jaya, Padma and Ratna are better yielding semi-dwarf rice varieties that were developed later. Sugarcane ka hybrid variety is what Saccharum barberry is native of North India and Saccharum officinarum belongs to South India. Saccharum barberry BN belongs to North India and Saccharum officinarum belongs to South India. Saccharum officinarum has thicker stem and high sugar content. मतलब साउथ इंडिया वाला थिकर स्टेम होता है और साउथ इंडियन कंटेंट है, बट इट डज नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में वो अच्छे से ग्रो नहीं होता। These two varieties were crossed together to get desirable qualities of both high sugar content, thicker stem, and ability to grow in India, North India. Co 419, 421, 453 are high yielding and having high sugar content are developed in India at Coimbatore, तमिलनाडु। तमिलनाडु कोयम्बतूर में को 419, 421, 453 are yield. Millets hybrid by maize Ganga 3, Jawar Co12 and Bajra Nifad have been successfully developed in India. Hybrid maize Ganga 3, Jawar Co12 and Bajra Nifad has been successfully developed in India. These varieties are high yielding and resistant to water stress. प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज, सबके सिर्फ एग्जांपल याद रखना है, बाकी पैराग्राफ कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, सम ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड इन प्लांट्स आर व्हाट? फंगाई के वजह से जो बीमारी प्लांट को होती है, द फंगाई दैट कॉजेस सम डिजीजेस टू द प्लांट्स आर ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट पे जो ब्राउन रस्ट लगता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, रेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। Brown rust of wheat, red rot of sugarcane, late blight of potato are the plant diseases that is caused due to fungi. Bacteria causes black rot of crucifers. Viruses causes tobacco mosaic virus. The basic objective of breeding for disease resistance is to develop inherent quality in plant to prevent the pathogen from causing such disease. मतलब इन प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटीज बनाने का एक ही मकसद था कि वो उन पैथोजन को रोक सके जो उनको बीमार करते हैं। तो हमने क्रॉप कौन कौन से बनाए हैं? डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स के एग्जांपल क्या है? सम डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स डेवलप्ड आर व्हाट? व्हीट, जिसके वैरायटी का नाम है हिमगिरी। तो हिमगिरी वैरायटी व्हीट, हिमगिरी वैरायटी ऑफ व्हीट आर रेजिस्टेंट टू डिजीज। तो कौन सा डिजीज? लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, हिल ब्लंट। ब्रासिका का एग्जांपल है पूसा स्वर्णिम, जो व्हाइट रस्ट है। कॉलीफ्लावर इज पूसा सुब्रा, ब्रासिका इज पूसा स्वर्णिम जो व्हाइट रस्ट से बचाता है। कॉलीफ्लावर का पूसा सुब्रा जो ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट से बचाता है। चिल्ली का एग्जांपल है पुसा सदाबहार, जो चिल्ली मोज़ैक वायरस और टोबैको मोज़ैक वायरस एंड लीफ कर्ल से बचाता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग देखो, mutation is sudden heritable change in the genotype caused naturally. It can also be induced by application of chemical mutagens. केमिकल म्यूटाजेंस यूज कर सकते हैं। नॉर्मल और फिजिकल म्यूटाजेंस आर हाई टेम्परेचर, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। केमिकल म्यूटाजेंस क्या हो सकते हैं? आर व्हाट? नाइट्रस एसिड, EMS, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट, मस्टर्ड गैस, कॉल्चिसिन। सीडलिंग्स आर सीड एंड seedlings or seeds are irradiated by 60 co 60 exposed to UV bulbs, X-ray machines, etc. Plant breeding for developing a resistant, sorry, some examples that treated seedlings. Example are what? Examples of muta- mutation breeding plants are, example of mutation breeding plants are NP 836। ये सब नहीं याद रखना है, जाने दो। डायरेक्टली यू लर्न प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से प्लांट्स बनाए हैं? डायरेक्ट ये पैराग्राफ याद करेंगे, सॉरी ये टेबल
बाकी आप लिख देंगे। तो ब्रासिका इज अ क्रॉप हाँ। जिसकी वैरायटी का नाम। मग पप्पा जात होते तेव्हाच. पप्पा जात होते तेव्हा रे. काय वरती? हेलो, काय? हुज दिस? हाँ. ओ. सुजल, स्विच ऑफ योर माइक प्लीज। तो क्रॉप इज ब्रासिका, ब्रासिका का वैरायटी है पूसा गौरव। एंड इसको हम कौन से इंसेक्ट से बचाते हैं? एफिड से। फ्लैट बीन इज पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, जिसको हम जैसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरर से बचाते हैं। ओकरा इज भिंडी, भिंडी का वैरायटी है पूसा सावनी, पूसा A4, एंड इसको हम शूट एंड फ्रूट बोरर से बचाते हैं। विल टॉक अबाउट टिश्यू कल्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। टिश्यू कल्चर, सो टिश्यू कल्चर इट इज एक्चुअली अ कवा कलेक्शन ऑफ। चालू असेल तुमच्याकडे? ते हिंना असेल, आपल्याला नसेल. आपल्याला कनेक्शन नसेल, हिंना असेल आधीच कनेक्शन. सूजल, माइक बंद करो प्लीज। Tissue culture, it is actually a collection of different techniques. In fact, emerged as a technique of plant biotechnology. Here, isolated cells, tissues, organs has grown in vitro or a solid or liquid medium under aseptic and uncontrolled conditions of light, humidity, and temperature for achieving different objectives. It is actually a collection of different techniques. In fact, emerged as a technique of plant biotechnology. Here, isolated cells, tissues, organs are grown in vitro. The in vitro means that is in the lab on a solid or liquid medium under aseptic and uncontrolled conditions of light, humidity, and temperature for achieving different objectives. The part of the plant which is used in tissue culture is called explant. Plant tissue culture is based on the principles of totipotency, which is an inherent ability of plant cells to grow, divide, redivide, and give rise to a whole plant. Right? इसका डायरेक्ट ना ये फ्लो चार्ट देख लो आप, आया क्वेश्चन अगर तो। फ्लो चार्ट फॉर टिश्यू कल्चर यू नीड टू सी। तो इसमें हम क्या करेंगे? क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर, मतलब जिस भी जगह, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में, जिन भी फ्लास्क, बीकर, ग्लास के बने होते हैं सब, उनको हम साफ करेंगे, स्टेरिलाइजेशन करेंगे। पहले साफ कर लेंगे ग्लासवेयर को, मतलब जिनमें एक्सपेरिमेंट करना है, फिर स्टेरिलाइज कर लेंगे एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन एन ओवन ओवन और ऑटोक्लेव कर लेंगे। फिर सिलेक्ट करेंगे एंड प्रिपेयर करेंगे न्यूट्रिशन मीडियम, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। एमएस मीडियम लेंगे विद नोन कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। Sterilization of medium in an autoclave for continuous 20 minutes under constant pressure of 15 lb per square inch। 15 lb per square inch ये प्रेशर है। lb इज नॉट, दैट इज 1 बार। देखो ये ग्लास वेयर है ना, इनको क्या करा है? स्टेरिलाइज कर लिया है किसमें? 15 बार lb पर स्क्वायर इंच। फिर प्रिपरेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, एक्सप्लांट लेंगे, इंक्लूड्स आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट फॉलोड बाय सरफेस स्टरिलाइजेशन एंड rinsing with वाटर, पानी से धो लेंगे। एक्सप्लांट इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रोइंग स्टॉक प्लांट। इनोकुलेशन ऑफ द प्लांट, एक्सप्लांट इन द कल्चर फ्लास्क, कल्चर फ्लास्क के अंदर एक्सप्लांट डालेंगे। देखो ये एक्सप्लांट कल्चर प्लांट के अंदर डाल दिया। Containing sterilized nutrient medium, inoculation is done in the laminar airflow cabinet unit. Incubation of the incubation of the inoculated explant. Here cells of explant grow, proliferate to form calyx within 2 to 3 weeks.
Subculturing of callus, if callus is to be maintained for longer period, callus is divided into 3-4 segments and then transferred to fresh culture medium. इनॉक्युलेटेड प्लांट जो है उसको इनक्यूबेट करेंगे, मतलब अलाउ करेंगे ताकि वो ग्रो कर सके. Here cells of explant grow proliferate to form callus within 2 to 3 weeks. फिर उस callus को भी कल्चर करेंगे. सब कल्चरिंग ऑफ callus is callus is to be maintained for longer period. फिर organogenesis is formation of organs, initiation of rooting and shooting करवाएंगे that eventually leads to plantlet formulation. फिर hardening करेंगे. Plantlets are transferred to polythene bags. देखो plantlets are transferred to polythene bags. इसके बाद right containing sterilized soil and kept at low light and high humid condition for suitable period of time, and then they are finally transferred to the field. This is done. We'll talk about single cell protein, which is very important. By 2050, the world would need to produce 12,000. 2050 तक the world would need to produce 1,250 million tons of meat and dairy products per year to meet global demands for animal derived protein. हम एनिमल प्रोडक्ट क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनिमल derived प्रोटीन मिल सके, और 2015 तक इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है. At current consumption levels, however, growing demand for protein will not be met sustainably by increasing meat and dairy production because of low efficiency of converting feed to meat and dairy products. Moreover, human population in underdeveloped and even in the developing countries is suffering from protein malnutrition. सबसे बड़ा problem protein malnutrition ही है, resulting into a variety of nutritional diseases. To fight with this, efforts are undertaken by conventional methods to increase the food yield by different methods to improvement, use of biofertilizers, biopesticides, chemical fertilizers, and high yield varieties. The efforts in the other direction are also be taken in non-conventional way. One such is waste production of single cell protein. Single cell protein. Importance of single cell protein was realized during World War One. SCP protein refers to the crude or refined edible protein extracted from pure microbial cultures or from dead or dried biomass. Microorganisms like algae, fungi, yeast, and bacteria have high protein content in their biomass. Algae, fungi, yeast और बैक्टीरिया के कॉलोनी में सबसे ज्यादा प्रोटीन मास होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है. These microbes can be grown using inexpensive substances like इन ऑर्गेनिजम्स को हम बहुत सस्ते चीजों पे लाइक एग्रीकल्चरल वेस्ट, वुड, शेविंग्स, sawdust, corn cobs, paraffin and alkanes, sugarcane molasses and human and animal waste पे ग्रो करा सकते हैं. The microorganisms utilize carbon and nitrogen present in this material and convert them into high quality proteins that can be used as supplements. Besides protein, SCP is also rich in vitamins, vitamin B complex, minerals, and fat. The single cell protein can be readily used as fodder for achieving fattening of calves, pigs, in breeding fish, and even in poultry and cattle farming. The microorganisms used for the production of SCP are as follows. फंगाई में हम फंगाई कौन सा यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एससीपी इज एस्परजिलस नाइगर. ईस्ट में सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, एल्गे में स्पिरुलिना स्पीशीज, और बैक्टीरिया में मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपिस. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन? ये भी आ सकता है 2 मार्क के लिए आपको. Microorganisms have high rate of multiplication. That means a large quantity of biomass can be produced in comparatively short duration. Short duration में ज्यादा से ज्यादा बायोमास बनाया जा सकता है प्रोटीन का. The microbes can be easily genetically modified to vary the amino acid composition. They have high protein content, that is 43% to 85%. A broad variety of raw materials, including waste material,
can be used as a substance for SCP. This also helps in decreasing the number of pollutants. Next is biofortification. This is also important to mark question है. It is a method in which crops are bred or produced for having higher levels of vitamins, minerals, and fats. So the process where the crops are bred for having higher values of proteins, vitamins, and fats, vitamins, minerals, and fats, that is better nutritive value. Due to this, the problem of malnutrition can be overcome. Following objectives were considered for the breeding program: protein content and quality ध्यान देना है, oil content and quality ध्यान देना है, vitamin content देखना है, and micronutrient content and quality ध्यान देना है. Protein, vitamin, micronutrient, oil content and quality. Biofortification can be achieved through conventional selective breeding practices and also through rDNA technology. Some examples, ये याद रखना बहुत जरूरी है, यहाँ से भी दो क्वेश्चन आ सकते हैं. Examples of biofortification. Some examples of biofortification are what? Fortified maize having twice the amount of amino acids, lysine and tryptophan. Maize, fortified maize बनाया है जिसमें amino acids, tryptophan और लाइसिन की मात्रा बहुत ज्यादा है. Wheat Atlas 66 बनाया है जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है. Iron fortified rice बनाया है जिसमें 5 times more iron है. Vegetable crops like carrot and spinach has vitamin A and minerals. Vitamin C enriched bitter gourd tomato have been developed by Indian Agricultural Research Institute. इसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स को ब्रीड करता है, राइट. एनिमल ब्रीडिंग, मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स. एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या हम कर सकते हैं? तो एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स लाइक buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camels, goats, etc. इन चीजों को देखो. मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स कैसे करेंगे? तो फार्म मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ हाई यील्डिंग ब्रीड्स, फूड रिक्वायरमेंट्स, supply of adequate nutritional sources, cleanliness of the environment and maintenance of health. Management of farm includes veterinary supervision, vaccination, high yielding cross between breed development, production and preservation of products. एनिमल ब्रीडिंग, ब्रीड जो है कैसे कर सकते हैं? इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, सॉरी इनब्रीडिंग कर सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स फॉर 4 to 6 generations in breeding programs, which is homozygosity. Outbreeding is what? Outbreeding, it involves breeding of unrelated animals. The animals may be of the same breed, but having no common ancestors for 4 to 6 generations. Outcrossing involves breeding between the animals of different species. It is also known as interspecific hybridization. Crossbreeding involves the breeding of superior male of one breed with superior female of another breed. By crossbreeding, new animal breeds of desirable characters are developed. For example, Hisardale is a new breed variety sheep developed from crossing of Bikaneri, Eve, and Merino rams in Punjab. Interspecific hybridization involves breeding of animals of two different but related species. Artificial insemination technique. Last is what? Moed technology, multiple ovulation, embryo transfer. ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए. Describe Moed technology, multiple ovulation, embryo transfer. इसमें क्या होता है? It includes the technology which provides the chances of successful production of hybrids. In this method, cow is administered with FSH or like hormone to induce follicular maturation and the super ovulation is brought about. In each cycle, 6 to 8 eggs mature simultaneously. The cow is either mated with a light blue bull or artificially inseminated. The blastocysts at 8 to 32 cell stage are recovered non-surgically and transferred to surrogate mothers. तो इसमें हम 6 to 8 एग्स मैच्योर करते हैं साइमल्टेनियसली एफएसएच लाइक हार्मोन डालकर. फिर बाहर निकालकर या तो हम उनको मेट कराते हैं इलाइट बुल से या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा देते हैं. 8 to 32 सेल स्टेज बनाते हैं. This technology is successfully used in cattle, sheep, rabbits, buffaloes, etc. High milk yielding breeds of female and high
quality meat yielding bulls have been found to be successful to increase herd size in a short period. We'll talk about dairy farm management. डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या है, ध्यान से सुनो. तो in India, cows and buffaloes are mainly used for dairy farms. Sahiwal, 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 Sindhi Gir are Indian breeds, and Jersey Brown, Swiss Holstein are exotic breeds which are used in dairy farming. Buffaloes are restricted to some parts of Asia only. In India, 6 breeds occurs via Zafrabadi, Mehsana, Murrah, Nagpuri, Neeli, Surati, which are all good milk producers. Cattle have to be well looked quality and ये सब बाकी सब लिख देना कि इसके अंदर क्या होता है. Milk processing, marketing and distribution play an important role in dairy industry. Variety of milk products like curd, cream, butter, ghee, condensed milk, khoa, cheese must be prepared from extra milk on demand. Poultry farm management. Poultry includes number of bird species such as chicken, ducks, turkey, and fowls, which are domesticated for their eggs and meat. On the basis of their origin, different types of poultry breeds are American breeds, Plymouth Rock, New Hampshire, Rhode Island Red. Asiatic breeds are Brahma, Cochin, and Langshan. Mediterranean breeds are Leghorn and Minorca. English breeds includes Australorp. Indian breeds are what Chittagong, Asil, and Brahma and Kadaknath. Leghorn is best layer for eggs, ये क्वेश्चन है. While Plymouth Rock, Rhode Island Red, Asil, Brahma, Kadaknath are preferred as broilers for meat. We should protect the birds from some diseases like viral diseases, bacterial diseases, fungal diseases, and parasitic diseases, protozoan diseases. Viral diseases like Rani Khet, bronchitis, avian influenza, bird flu, etc. Few years back, bird flu have serious influence poultry farming and human infections too. Bacterial diseases mainly includes pullorum, cholera, typhoid, TB, curd, CRD, chronic respiratory disease, enteritis. Fungal diseases are aspergillosis. Parasitic diseases includes infections like roundworm, cecal worm, etc. Protozoan diseases are coccidiosis. एपीकल्चर और बी कीपिंग, ये एक बार रीड करना मधुमक्खी के लिए. तो एपीकल्चर और बी कीपिंग डील्स विद एन आर्टिफिशियल रेयरिंग ऑफ हनी बीज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स लाइक हनी, वैक्स, pollen, bee venom, etc. Propolis, blue bee glue, and royal jelly, as well as pollinating agents for crop plants. The 4 species of honeybees commonly found in India are Apis dorsata, रॉक बी कहते हैं, वाइल्ड बी कहते हैं, एपिस फ्लोरिया लिटिल बी कहते हैं, एपिस मेलिफेरा यूरोपियन बी कहते हैं, एपिस इंडिया जो इंडियन बी कहते हैं. राइट. वी शुड सी पॉलीमॉर्फिज्म इन हनी बी के कॉम में आपको वर्कर्स दिखेंगे, क्वीन दिखेगा, ड्रोन दिखेगा. Beekeeping is practiced in the areas where sufficient wild shrubs, fruit orchids, and cultivated crops are present. Beekeeping requires the equipments like beehive boxes with comb foundation sheets, bee veil, smoker, bee brush, gloves, gumshoes, uncapping knife, swarm net, queen excluder, overall hive tool, etc. Structure नहीं याद रखना है. Artificial beehive. For successful beekeeping, one must be familiar with the habits of bees, selection of suitable location, catching and hiving of swarms, management of hives during seasons, handling and collection of honey, bee wax and other products, periodic inspection for cleanliness of hive boxes, activity of bees, queen, condition of brood, provision of water. Fishery is a branch of applied biology which deals with the catching, processing, fish farming, and marketing of fish and other useful aquatic animals such as prawns, lobsters, oysters, mussels, and crabs. 3 divisions of fishery are Indian fishery, marine fishery, and estuary fishery. Indian fishery includes culturing and capturing of fish from freshwater bodies like ponds, lakes, dams, and river. Island aquatic
Inland aquatic area for in country covers 40 to 50 lakh acres. The common freshwater fish are labio, rohita, rohu, katla, sirina, mirigala. Marine fishes includes capturing Indian coastal line is about 7,500 meter long. The common marine fishes are harpodon, bombay duck, sardinella, sardine. दो एग्जांपल याद रखो. Estuary fishing includes capture of fish from estuary, the place where river meets with the sea. Sunb Sundarban area in the West Bengal. बाकी ये सब चीज आप एक बार रीड करना, जस्ट रीड, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं. ये भी नहीं पढ़ना है. Next is what sericulture. Sericulture is a branch of applied zoology which deals with the rearing of silkworm and production of silk. Right. ये पूरा पढ़ना है आपको. लैक कल्चर भी रीड करें. लैक कल्चर, लैक is produced by an insect, Tracardia leca, which is quite small in size and colonial in habit. Resins like substances produced by dermat glands of female lac insect. Insect feeds on succulent twigs of certain plants like bear people, palas, kusum, babul, etc. and it secretes pink-colored resin that hardens on coming in contact with the air, forming lac. It is produced on a large scale all over the India. Natural lac is always contaminated. Shellac is pure form of lac obtained by washing and filtering. Lac insect is a native of India and shares it's about 85% of total lac produced in the world. Products of lac play a very important vital role in the economy of the farmers. Lac is used in bangles, toys, woodwork, inks, mirrors, etc. We have already covered this topic, microbes in human welfare. 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या कवर करना है. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन फूड प्रोडक्शन. सबसे पहला टॉपिक, ट्रेडिशनल मॉडर्न फर्मेंटिंग बैक्टीरिया. डोसा, इडली, ढोकला, ये तो पढ़ना ही है आपको. डोसा are fermented products produced due to activity of bacteria. They are fermented preparation of rice and black gram with airborne leuconostoc and streptococcus species of bacteria. Carbon dioxide produce होता है which causes puffing of the idli. Microbes as source of food, SCP, single cell protein. Some mushrooms and truffles are directly used as food. Dairy products, curd, lactobacillus,
Acidophilus. Yogurt produced by curdling milk with the help of Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus. Buttermilk, acidulated liquid left after churning of butter from curd is called buttermilk. Cheese, पूरा पढ़ाया था. The milk is coagulated with lactic acid, bacteria and curd formed is filtered separate वे निकालने के लिए, वे मतलब प्रोटीन. The solid mass is then ripened with growth of mold that develops flavor in it. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste. TFT बताया था मैंने, which are developed by different species specific microbes like Roquefort and Camembert cheese are ripened by blue-green molds, Penicillium roquefort and Penicillium camemberti, respectively. The large holes in species are developed due to the production of large amount of CO2 by bacterium known as Propionibacterium shermani. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनेगा देखो. अल्कोहलिक बेवरेजेस पूरा पता है आपको. 5000 to 7000 वाइन बियर are produced without distillation. White whiskey, brandy and rum are distilled beverages. Tiblet tower fermenter is used for large scale production of alcohol, right? Production of organic acids. Microbes are also used for the commercial and industrial products of certain organic acids. These organic acids could be what? This could be citric acid obtained from Aspergillus niger, gluconic acid from Aspergillus niger, fumaric acid from Rhizopus aureus, acetic acid from Acetobacter aceti. अपने टेक्स्ट बुक में दो और दिया है एनसीईआरटी में. लैक्टिक एसिड दे हैव गिवन, राइट. विटामिन कुछ कुछ मिलता है तो कुछ फंगाई से, जैसे कि न्यूरोस्पोरा गॉसिपाई से विटामिन B2 मिलेगा. इरिमोथीशियम एचबी से फिर विटामिन B12 मिलेगा. सुडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस से विटामिन C मिलेगा एस्परजिलस नाइगर से. दिस आर द विटामिन्स. एंटीबायोटिक प्रोडक्शन पूरा सिखाया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, वो स्टोरी आपको याद रखना है. Most antibiotics are secondary metabolites. They have therapeutic importance and are used in medical treatment. Right? Some antibiotics producing microbes are chloromycetin is an antibiotic which is obtained from Streptococcus venezuelae, erythromycetin from Streptococcus erythraeus, penicillin from Penicillium chrysogenum. अपने टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में पेनिसिलियम नोटेटम दिया हुआ है. स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, ग्रीजोफल्विन फ्रॉम पेनिसिलियम ग्रीजोफल्वम, bacitracin bacillus licheniformis, bacillus licheniformis, oxytetracycline streptococcus aureus. कुछ एंजाइम्स बनाते हैं, like we produce invertase enzyme from Saccharomyces cerevisiae, pectinase from Sclerotinia libertine, Aspergillus niger lipase from Candida lipolytica, cellulase from Trichoderma conigi. Gibberellin is obtained from the fungus Gibberella fusiculae and it was isolated by Yabuta and Sumiki. मैंने plant growth and development में पढ़ा है. Microbes in sewage treatment पूरा पढ़ाया है, गटर का पानी कैसे साफ करेंगे. Preliminary treatment है. The preliminary treatment includes screening and grit chamber. Screening sewage and wastewater contains plenty of splendid floating materials, coarse and solid particles along with dissolved substances. Grit chamber है जिसमें after screening the filtered sewage is then passed into series of grit chambers. These chambers contains large stones, pebbles and brick ballast. Coarse particles settle down by gravity. ये सब पूरा पढ़ लेना है. ये एक फ्लो चार्ट याद रखो. गटर के पानी को पहले स्क्रीनिंग के लिए भेजेंगे जिसमें प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसमें हैवी सॉलिड्स निकल जाएंगे. फिर ग्रिड सेटिंग में सॉइल और स्मॉल पेबल्स को सेट कर देंगे नीचे, जिसकी वजह से एक्टिवेट प्राइमरी स्लज बन जाएगा. प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा जिसकी वजह से सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स निकल जाएंगे. उसको एक एरेशन टैंक में भेजेंगे. एरेशन टैंक में सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा. एरेशन टैंक में इफ्लुएंट को ट्रीट करेंगे. इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया डालेंगे. एरोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक बायोरिएक्टर डाइजेस्टर एक्टिवेटेड स्लज में जाएगा और जो ट्रीटेड इफ्लुएंट है, साफ हुआ पानी, उसको रिसाइकल करके बाहर फेंक देंगे.
नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन, ये पढ़ लेना आप। कह रहे हैं बायोगैस बनाना होता है। तो बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड विच इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन 50 to 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 40%, hydrogen sulfide 0.3%, and other gases carbon monoxide, nitrogen, and hydrogen. Plants waste, animal waste, domestic waste, agricultural waste, municipal waste, forestry waste are commonly used for biogas production. Cattle dung is most commonly employed substrate for biogas production. It is a rich source of cellulose from plants. Next is biogas production. It was developed by KVIC Khadi and Village Industries Commission, full form है, and ERE, which is Industrial Research Agricultural Institute, Indian Agricultural Research Institute ने बायोगैस प्लांट बनाया था। इस बायोगैस प्लांट में क्या क्या है? दिस बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ 10 to 15 फीट डीप कंक्रीट टैंक है, जिसके अंदर एक फ्लोटिंग कवर प्लेस्ड है, और एक डंग वाटर रिप्लेस करेंगे, इसको इनलेट से लाएंगे। यहाँ मिथेनोजेंस होंगे। ये मिथेनोजेंस क्या करेंगे? एनारोबिकली फूड को डाइजेस्ट करेंगे, और फूड को डाइजेस्ट करने के बाद मीथेन गैस बनाएंगे, मतलब बायोगैस बनाएंगे, और इस बायोगैस को हम सप्लाई करेंगे। इसमें स्टेप क्या है? हाइड्रोलिसिस और सोल्यूबलाइजेशन। इन इनिशियल स्टेज, raw material cattle dung is mixed with water in equal proportion to make slurry, which is then fed into the digester. Here, anaerobic hydrolytic bacteria, example Clostridium, Pseudomonas hydrolyse, carbohydrates into simple sugars, proteins into amino acids, and lipids into fatty acids. Next is acidogenesis. In this stage, facultative anaerobic acidogenic bacteria and obligate anaerobic organisms convert simple organic materials into acids like formic acid, acetic acid, hydrogen, and carbon dioxide. Methanogenesis. The methanogenic bacteria like Methanobacterium, Methanococcus converts acetate, hydrogen, and carbon dioxide into methane, carbon dioxide, and water. 12 molecules of acetic acid forms 12 molecules of methane, 12 molecules of carbon dioxide. 4 molecules of formic acid produces methane, carbon dioxide, and water. Carbon dioxide and what H2 reacts with methane to form hydrogen to form methane. Benefits of biogas: it is cheap, safe, and renewable source of energy. It can be easily generated, stored, and transported. It can be used for domestic lighting, cooking, street lighting, as well as small-scale industries. It burned with blue flame and without smoke. It helps in improve sanitation of the surrounding. It is eco-friendly and does not cause population and imbalance of the environment. Sludge which is left over is used as a fertilizer. Use of microbes as biocontrol agents में क्या क्या पढ़ना है आपको? तो examples of microbial biocontrol agent: Bacillus thuringiensis is used to get rid of butterfly caterpillars, where dried spores of Bacillus thuringiensis are mixed with water and sprayed onto the vulnerable plants such as brassicas and fruit trees. These spores are then eaten by the insects. Larva. In the gut of the larva, the toxin cry protein is released and the larva gets killed eventually. Trichoderma species are free-living fungi found in the root ecosystem rhizosphere. These are effective biocontrol agents of several soil-borne fungal plant pathogens. Microbial pesticides and their host. The correlation is depicted as per the following. ये कुछ है, कह रहे हैं कुछ बैक्टीरिया जैसे बैसिलस thuringiensis का माइक्रोबियल कंटामिनेशन होगा तो उसका होस्ट होता है कैटरपिलर, कैबेज वॉर्म और एडल्ट बीटल, पैपिले एंड बायोलेमिनेस, लेंटिमॉर्बस। फंगाई में ब्रिवोरिया ब्रासिका, ब्रासियाना एफिड को बचाता है। प्रोटोजोन में नोसिमा लोकस्टे, ग्रास ऑपर, कैटरपिलर, रिकेट्स है, वो क्रिकेट्स नहीं रिकेट्स। वायरसेस न्यूक्लियोपोलियोड्रो वायरस एंड ग्रैनुला वायरस, कैटरपिलर्स एंड जिप्सी मॉथ, एंड्स, ये सब बचाता है। बायो हर्बिसाइड्स, माइक्रोबियल बायो हर्बिसाइड्स अंडर होस्ट। हर्बिसाइड्स मतलब जो हर्ब्स को किल करेंगे। पैथोजेनिक फंगाई एज माइक्रो बायोफाइट्स। Phytophthora palmivora controls milkweed in orchids. Alternaria crassa controls water hyacinth. Fusarium species control most of the weeds.
Bacterial pathogen as herbicides. Pseudomonas species attack several weeds. इतना ही याद किया बहुत है. Role of microbes as biofertilizers. Biofertilizers कह रहे हैं inorganic यूज करते थे, organic यूज करते थे. Inorganic fertilizers are synthetic, whereas mineral salts of NPK, nitrogen, phosphorus, potassium mixed in different proportion and then dusted in the field. Organic fertilizers are biological in origin and include farm and mature farmyard manure, compost, and green manure. Use of these fertilizers increase the fertility of the soil. This is known as biofertilizers. Types of biofertilizers are what? First is nitrogen fixing biofertilizers that fixes nitrogen. They are known as diazotropes, which convert symbiotic. Third is symbiotic nitrogen fixing. Symbiotic method which are found associated with the roots. Microorganisms are Rhizobium, Anabaena, Frankia. These are always associated generally with the underground parts, that is roots and higher plants. Free living or non-symbiotic nitrogen fixing organisms. These are Azotobacter, Nosotoc, Clostridium, Bijanikia. Phosphate solubilizing biofertilizers, for example, Pseudomonas cerata, Strata, Bacillus polymixa, Agrobacterium, Micrococcus, Aspergillus species. Compost making biofertilizers. Composting is a natural process that turns organic material into a dark rich substance called as compost or humus. The composting process is dependent on the microorganisms to break down organic matter into compost. Cyanobacteria as biofertilizers. Many cyanobacteria are aquatic and many terrestrial, free living or symbiotic. Aerobic photosynthetic nitrogen fixing heterocystis or non-heterocystis forms. Example, Anabaena, Nostoc, Dictonia, Oscillatoria, etc. are Anabaena, Nostoc, and Polyphotrix are associated with lichens, while Anabaena is associated with the plants like Azolla and Cycas. Fungal biofertilizers could be of two types. It could be ectomycorrhizae and endomycorrhizae. Ectomycorrhizae, they have small and developed mycelium that forms mantle on the outside of the root. This increases the absorptive surface area of roots and accelerates uptake of water and nutrients. Endomycorrhizae, they grow in between and within the cortical cells of the root. Fungal hyphae penetrate the cells and form finely branched arbusculus intracellularly and vesicles, mostly in the intercellular species of cortical cells. Biofertilizer organisms, microorganisms, Rhizobium. Rhizobia are rod-shaped, motile, aerobic, gram-negative, non-spore forming nitrogen-fixing bacteria containing NOT genes and NIF genes. They form symbiotic association with roots of leguminous plants. They bring about nodule formation on the roots and multiply inside the root nodule. They fix atmospheric nitrogen into organic forms which can be used as plants for nutrients. For example, R. leguminosarum is specific to pea and R. fascioli is to beans. Azotobacter is an important and well-known free-living nitrogen-fixing aerobic non-photosynthetic non-nodule forming bacterium intimately associated with the roots of grasses and certain fungal plants. It is used as biofertilizer for a non-living, non-leguminous plants. Azospirillum, it is free-living aerobic nitrogen-fixing microbacterium, bacterium associated with roots of corn, wheat, and jawar. It fixes considerable quantity of nitrogen, that is 20 to 40 kg in non-leguminous plants. Anabaena is a genus of multicellular filamentous cyanobacteria that exist as phytoplankton. It has the ability to fix nitrogen and also form symbiotic relationships with certain plants such as coralloid roots of cycas. Azolla is a free-living floating water fern. Azolla plant consists of following floating rhizome with small overlapping bilobed leaves and roots. The leaf shows dorsal and ventral lobe. With this, we have done with the chapter. इसमें 5 से 6 मार्क का ही चैप्टर है ये.
तो लिमिटेड चीजें पढ़ें, वन लाइनर्स पढ़ें, 2 मार्क क्वेश्चंस पढ़ें, 3 मार्क क्वेश्चंस भी कुछ कुछ हाईलाइटेड वाले पढ़ लें। कुछ डाउट है तो पूछ लें प्लीज। धीरम, जयश्री, मानसी, रोही, सुजिल, ताहा, जैद, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, फिर हम मीटिंग स्टार्ट करें, स्टॉप करेंगे।